A very good evening to all of you, and I'm really happy to present the second edition of CCI's cultural event. And it's a great pleasure because we have a lot of enthusiastic participants, not only who are CCI Life members, but even relatives of our dear CCI Life members. We have some really cute kids, some really innovative presentations for sharing with you, all of you, to entertain you today. So I won't keep all of you waiting on this fine Saturday evening. I would like to start with a presentation which is very special, very innovative, and Dr. Rajiv Vig has basically inculcated poetry with paintings. And before I get the things on roll, from my side, I would like to wish Dr. Krishna sir a very big happy birthday. I would really like to thank Krishna sir for being so supportive, innovative, and a true guiding northern star to all of us youngsters as to how we can effectively utilize our resources. And here we are, all of this beautiful 2023, with January about to end and February about to come. I would like to begin this second edition with Dr. Rajiv Vik's presentation of poetry with paintings. कभी नींदों ने परेशान किया, कभी ख्वाबों ने हैरान किया, कभी अपनों ने गुमान किया, कभी गैरों ने एहसान किया। कभी पिंजरे में चांद को करना चाहा, कभी गांठ में पानी को भरना चाहा। ऐसी कितनी ही हसरतों का वादा कमबख्त जिंदगी से करना चाहा। ऐ खुदा, अभी वक्त लगेगा मुझे तेरी पनाहों में आने में, अभी वक्त लगेगा मुझे तेरी पनाहों में आने में, अभी कुछ और इजाफा होने दो मेरे गुनाहों में। हर वक्त कुछ तलाशता हूँ, मैं खुद ही मंजिल, खुद ही रास्ता हूँ। खुद से खुद को बेहतर कर सकूं, हर लम्हा खुद को तराशता हूं। कुछ तेज हैं, कुछ सुस्त हैं, कुछ नासाज हैं, कुछ दुरुस्त हैं। काफिले सबके जुदा से, पर मंजिलें एक मुश्त हैं। साजिशों के कारवां बढ़ने लगे हैं, शायद वो भी हमें पसंद करने लगे हैं। सोचता हूँ ख्वाबों का कारोबार कर लूं और खुद को और भी बेरोजगार कर लूं। मसला है, अगर वो मान भी गए तो कैसे निभाऊंगा, अगर वो मान भी गए तो कैसे निभाऊंगा। वो तो खुदा बन जाएंगे, मैं बंदा भी ना रह पाऊंगा। आईना हर एक को अक्स दिखाता है, पर मुझको तो मायूस शख्स दिखाता है। सोचा एक खुशनुमा चेहरा उधार ले लूं, ढूंढा तो हर शख्स मुझसा नजर आता है। खुद को आला कहते हैं, सबसे ऐंठे रहते हैं। लिहाफ गर्द का है खुद पर और धूल आईने पे कहते हैं। मेरे चांद में भी दरारें हैं, मेरे अकेलेपन में भी कतारें हैं। टूटी हुई सीढ़ी है मेरी और आसमां से ऊंचे चुबारे हैं। बहुत सुकून से जीते रहे हम रंजिशों के दौर को, कुछ सिलसिले खत्म हुए, कुछ नए दोस्त तोड़ दो। Wow, really innovative and lots thought provoking also. So
like Rajiv has really outdone this thought-provoking stuff, and that is why we to make him our opening batsman of today's program. Well, the thought provocation has to be mixed with a lot of experience, and whomsoever to add experience, humor, and a flavor of his own agamisms. Rather, I would call Agam Vora sir to present his very special presentation of his stand-up. I wouldn't call it comedy; it's more of experiences. Good evening, everybody, and I welcome you all to this cultural show by our favorite association, that's CCI. So, friends, it's all about dreams. Thanks to CCI that I'm here doing this talk show, a cultural night of CCI. It all began with a dream. Last month, when I saw this first ever cultural night show, and I wondered, will I ever get chance to try this hidden qualities, hidden abilities in front of my CCI, my extended family? Will they ever give me chance to perform? And here I am today. A few of you may know that dreams is my favorite topic for discussion. Be it my TED talk, or be it my first ever non-medical talk, be it a talk at local association, or be it a talk at school inauguration program, somehow I end up talking on dreams. So I thought of choosing the same topic, dream, to waste your next 10 or 15 minutes. Bijal, my only wife, was laughing away to glory when she realized that I'm asked by none other than N.H. Krishna himself to do this. And this laughter began even before I started jotting down points on what I'm going to discuss. God knows why she does not take me seriously. I wanted to tell her that, like Mr. Sachin Tendulkar or Virat Kohli, how good master batter they are. Pardon me for my English. I said, I'm also a good joker, but she would not believe that. I'm sure at the end of this particular 5, 10, 15 minutes, I'm going to prove her wrong. And I have decided to take up this mammoth task of doing this stand-up comedy. No, sitting down comedy in front of you. Actually, I told Krishna and Ravi Bhai that there is a very interesting seminar coming up, the academic meeting coming up this Thursday, and please make me faculty there. And both of them smiled and told me that we've heard you many times. Everybody's aware of your academics and huge intelligence that you have. I think it's the time you try something else, and we give you this platform to perform. And that's why I'm here. Dreams, people keep on telling me that dreams make you achieve something, but I don't agree to that. Dreams can land you in trouble. Let me share a story with you. I have a very good friend of mine who's working as a security officer with one of the big business tycoon here in Mumbai. And one night when he was on duty, he had a dream. Next day morning, his boss was going to take a trip abroad. And when the boss came down, he met him and he said, sir, I have had a dream yesterday night which says that your flight is going to have problems. And I seriously feel you should not travel. Boss is a frequent traveler, business tycoon, has his business meeting lying up there, but somehow believes him and he says, okay, cancel this trip. And to everybody's surprise, the flight meets with an accident and a lot of people are injured there. And the boss is super happy with him, calls him and rewards him with a huge cash. But at the same time, he throws him out of the job. You know why? Because he was found sleeping on duty. He was on night duty, but he was sleeping. Those dreams can land you in trouble. And I have also felt this. Why anybody else? I will give you my own example. So dreams are actually a series of pictures, ideas, emotions, feelings that occurs in a subconscious mind, unconscious mind during your sleep. And I realized every human has dream probably once in 2 hours, and each dream could last for a few minutes, few seconds, few minutes, up to 20 minutes. And most of us do not remember it. It's actually a reflection of what is going on in your subconscious mind at the at subconscious level, and this mind gets inputs from your feelings, from your experiences, from your emotions, etc. So if you are feeling nice and happy, you get good dreams. But if you have a fight with your Bijal, you may get scary dreams. There are ways to get dreams,
As a medical student, you look at ways of getting it, the indication, the side effects, the contraindications, and I've also kept my next few minutes on that. So there are ways of getting grief. And when I asked about this to my guru, the Gurudev Papalu Singh Maharaj, who's the expert on dreams, I told him that most of these dreams do not meet reality. And he said for that, it has to be very early morning dream. And only early morning dreams get the test of reality. And when I discussed this problem with my core friends, they came out with very interesting ideas. They said, Agam, to get that, you need to sleep late. And then what? Your friend's advice is so perfect. And I started implementing that immediately, started sleeping late. Trust me, now I get dreams early morning. So what? रात को सोते नहीं, hypertension हो गया, diabetes हो गया, I'm sleep deprived, I'm kind of thrown out of my bedroom, I find it difficult to concentrate on my day-to-day functions, and whatever are these problems with this daytime hypersomnolence, but I've started getting dreams early morning. And I conclude by saying that friends are really important in your life because they give you fantastic ideas. Let's get effects of dreams. So the dreams have got fantastic effect on me. I remember first ever in my dreams, Madhuri Dixit. I had Madhuri Dixit in my dreams. That day went so beautiful. You paka all during your sleep and makes you euphoric for days, for weeks, for a long time. And especially when you have that song, Karne Laga, that Madhuri Dixit song. And actually, I got so impressed with that song, and I wanted to, I had the urge to excel in the field of dancing as well. Thanks to Bijalji, strongly opposed that. Otherwise, you would be finding me dancing now here rather than doing this laughter sit show. The advantage of dreams, if you really ask me, there are so many advantages. The one biggest advantage is you don't have to be loyal to your dream partner. There, I mean, you don't have to be loyal to Madhuri Dixit. You can have Sri Devi, you can have Katrina Kaif, you can have Tapsi Pannu, and of course, how can you forget Manisha Koirala? In fact, there are a couple of incidences, couple of events when I had all of them together, of course, in my dreams. And during that time, you feel like, that Jabba's movie song when Sri Devi is drugged and then she has all those beautiful colors there. She gets euphoric, those rainbow colors there, those lotuses growing, those roses growing, and then some interesting graphic design happening at the back. And you could feel joy oozing out of all her body parts. I was feeling something similar. And then, since we are talking about advantages of dream, the biggest advantage is that dreams are not real. You can afford to have only the part that you like. Imagine reality if you are with Tapsi Pannu and Madhuri Dixit and Katrina Kaif all together. The thought makes me sweat. It can be a big burden, mental, social, financial, and of course, not to mention physical as well, especially after 50 years of your age. I was looking at indications for dreams. What do dreams indicate actually? It indicates your path. ये आपको एक दिशा दिखाता है, एक राह दिखाता है. It tells you what's going on in your subconscious mind. It tells you what to aim for in life. In awake state, you may have a lot of plans, but dream tells you what you're actually destined for, or designed for, or made for. As a child, I wanted to become inspector or an army officer. It was in my dreams. I wanted to be a Bollywood hero with so many heroines moving around me, but seems my parents had a dream which was far stronger than the dream I had, and I ended up becoming doctor. So it was my another discussion with Guruji Maharaj that if two people dream about the same thing, then whose dream get real? And they said that came probably, if you are part of that CCI party group, there was one story. The story says like this: there was Rohit, was very thin and pale and tall, and he was standing at the bus stop, and suddenly a car stops, and a beautiful girl waves hand at him, and he's surprised, and he says, "Jasmine, you?
my old batchmate, what are you doing? So she never gave him bhav all throughout the college days and school days, and he suddenly calls him and gives him a warm welcome and says, hey, how are you? Jasmine says, how about coffee together? And Rohit didn't know what to do, and he was completely taken aback, and he said, yes, of course, why not? Majja aa jayega. So she says, let's go home and we'll have coffee together. And then they go home, and she takes him to the bedroom and asks him to sit and puts on the AC and says, wait for some time and I will just join you. And he starts dreaming. As he enters the room, she says, why don't you take off your shirts? You are sweating, and Rohit starts dreaming again. So now Rohit is sitting in the bedroom with AC on without his shirt. And Jasmine asks him to be comfortable, and he says, I will be back in few minutes. And Rohit starts dreaming. 5 minutes later, Jasmine enters the room with two of the children and tells him, Dekho bachcho, what I was telling you. If you don't have Horlicks in time, this is what's going to happen. Look at the thin and lean body. Sab iske jaise ho jaye. And the dreams were shattered. Why someone else's dream? Look at what happened to me. It seems me and Abhishek Bachchan had the same dream. We were dreaming about the same person, but his dream got taste of reality, and मेरा dream ही रह गया. कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए. Dreams may have its own side effects as well. You may get into, you may get so much into your dreams, but you do not realize what to do with that. Trust me, it has got nothing to do with Gandhi family hero, who dreams about becoming prime minister of a country without realizing that his dreams would land the entire nation into trouble. That it could be very costly for the entire nation. Dreams may have contraindications also. There could be, let me try in Nitin's style. Nitin has a style of putting across poems, and I came across this poem which I copy and paste here. Let me recite it for you. It is written by a husband to his wife. This is not me writing it to my wife, because Bijal may also be listening to this show, and I don't want her to get any wrong ideas. My darling, my lover, my beautiful wife, marrying you has messed up my life. I see your face when I'm dreaming. That's why I always wake up screaming. It says kind, intelligent, loving, and hot. It describes everything that you're not. I love your smile, your face, your eyes. Damn, I'm good at telling lies. My feeling for you, no words can tell, except maybe go to hell. What inspired this amazing rhyme? A bottle of Fanny, a little of salt and lime. But at the same time, I came across, this meeting. I was talking to Albert Einstein the other day, and Einstein was solving a problem, and on board he wrote 9 into 1 is 9, 9 into 2 is 18, and he was going like that. And in the end, he said 9 into 10 is 91. And suddenly there was a big chaos in the classroom, and everybody said, hey, Einstein, you made a mistake, And obviously the correct answer is 9 into 10 is 90 and not 91. Einstein waited for everybody to, quieten, and then he said, despite the fact that I analyzed 9 problems correct, no one congratulated me for that. It's only when you make mistake, everyone starts laughing. And it will probably make you, even if you are successful, your mistakes will only be noticed. So not let the criticism destroy your dreams. He said the only person who does not make mistake is someone who does not do anything, does not try, does not dream of anything. Let me conclude by saying that dreams could have differential diagnosis as well. Abhi ki baat hai. Last month, I had a fantastic dream early morning, and I got up and told Bijal, get ready. Keep the fantastic breakfast ready. Get samosa, get jalebi gantia, get those dhokla, gujju food, and have garma garam chai with those elaichi and masala, and get best of the crockeries out on dining table. She was very curious. You never told me.
I said I had a very early morning dream, and that's going to happen today. I had a dream where Mr. Mukesh Ambani ji is going to visit our house, and there are so many financial irregularities going on in the country, and World Bank is facing financial crisis, and he wants to have a meeting with me to discuss all that. And after that, I have back-to-back meeting. Ms. Modi ji is coming. There are elections upcoming, and then there is a war going on. Russia-Ukraine is at fault. US is acting funny. There are problems on international front, and we need to discuss that. And she smiles at me and gives me first ever knowledge of differential diagnosis of dream. And she said, Agam, it is called hallucinations. They're not dreams. रात को लगता है थोड़ी ज़्यादा हो गई. 3 top dreams of a man: to be as handsome as her mother feels he is, to be as rich as her child feels that he is, and to have as many girlfriends as his wife suspects that he has. But as you age, there comes wisdom. Your dreams also get matured. So I'm now moving on from Madhuri Dixit, Sridevi, Katrina Kaif, Tapsi Pannu to little more matured dreams. And when I tell you this, last story that I'm going to share with you comes up, and that's a 70-year-old retired military officer. He was sitting on a sea phase and was, he loved to catch fish. And, suddenly a fish comes up on the bank and says, hey, pick me up. And he couldn't see anything. And then suddenly there was a fish, and he thought he was dreaming. When he heard that voice again, hey, pick me up. And he looked in the water, and there is a fish which is floating. And the officer said, are you talking to me? The fish says, yes, I'm talking to you. Pick me up and kiss me, and I will turn into the most beautiful woman you have ever seen. I will make sure that all your friends are envious of you, jealous of you, because I want to be your bride. The retired officer looked at the fish for the short time, reached over that, picked up that fish, and placed that fish in the shirt pocket. And the fish said, what are you doing? You're gone nuts. Did you not hear me? What I'm saying is, kiss me and I will be your wife forever. He opened his pocket, looked at the fish and said, nah, re. Rather I would have you talking to me than have a nagging wife. So with that came wisdom. I feel your future depends on your dreams. I feel you must not waste your time in listening to me, but do more fruitful, more creative work of dreaming. So please go off to sleep. I wish, I pray, and I bless you all a very peaceful sleep and a good dreams. Thank you. Thank you very much. Wow. Well, Agam sir has a habit of creating. I'm sorry for the blurred video. Agam, there is a lot of fog in Indore today, and I'm sitting on the terrace. Well, Agam sir is really means an amazing knack of creating an amazing world where everything is good, everything is positive, provided you go sir's way. So, but sir's way is cool. Means if you look at it, sir always believes in being cool. Sir is cool, and I think he teaches us all that if you follow his philosophy, you will be a very, very happy person. Amazing. Dreams and mistakes. Well, you know that security guard, poor guy, lost his job, but still, my essence of Agam sir's talk was that dreaming is a good thing. We should all dream, and we should all be positive. The essence of CCI is positivity. The essence of CCI is one for all and all for one. We have to be together. We have to be progressive. There is nothing in life that can hold us back. With that, I would like to introduce one of the most positive people that I have met, Dr. Kirat Sibia. She is excellent, at par, fully energetic, and ever-ready battery with a double charge. I would like to go ahead with her performance, and really, you guys stick to this. This is something very special. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू.
Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. ये दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. Wow. Well, really, Kirat, amazing. Thanks for dedicating your presentation to Krishna, sir. Again, I'm sorry for the blurred video. A lot of fog in Indore today. It's very cold, chilly, and I'm really enjoying a friend's party at the terrace. So I would really request all of you CCI guys logged in today to please go and have a good time today. Well, Krishna sir's birthday, and for us it is no less, means he's very special. You know, this is one guy who thinks ahead, who thinks all the time, not only thinks for you but thinks for CCI all the time, how to make it more academic, how to make it more progressive, so that, you know, each and every person who is associated with CCI benefits from the whole thing. So now I would like to move on. We have a lot of performances today. I would like to welcome one of the most favorite people of mine in this world, Dr. Vrushali ma'am from Pune. Dr. Vrushali ma'am is, what can I say? Words falls short for describing her. She's extra special, and I would like to request to play her performance. It's over to you, Vrushali ma'am.
Wow. Means, Roshali ma'am, I don't know what it is that you have, but you're something out of the world. Means, I know you might be in Hyderabad just now, part of Broncos and all, but means your presence, your performance in itself fills you with such a lot of positive energy and enthusiasm that it is amazing. Means really, I find your performances so much enthusiastic and full of positivity that I'm speechless. And I have no other person in our respected, beloved, and most special Dr. N.H. Krishna sir, who will now be giving his special performance. Again, sir, wish you a very happy birthday. Thank you. Thank you for making all of us whatever we are today. Thank you, sir. ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದೆ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದೆ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಛೇಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಡುವೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವೆ ಅಶ್ವಮೇಧ 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 ಚಂದ್ರರೇ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ಗಿರಿಶೃಂಗವೇ ನಿನ್ನ ಅಂಗವೋ ಓ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೇ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಗಳು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲೋ ನಿನ್ನ ವೇಗವೋ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋದ ಜೀವಾಶ್ವವೇ ದೂರಾದೆಯ ಪ್ರಾಣಾಶ್ವವೇ ಮರೆಯಾದೆಯ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವೆ ಅಶ್ವಮೇಧ 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 ಅಶ್ವಮೇಧ
ವಿಷವ್ಯೂಹವಾ ಪುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಲು ವೀರಪೌರುಷ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತಕೆಡ ಧೀಂಧರನ ತಕೆಡ ಧೀಂಧಿರನ ತಕೆಡ ಧೀಂಧಿರನ ಧೀ ಧಿರಣ 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 ತಕೆಡ ಧೀಂ ತಕೆಡ ಛದ್ಮವೇಷವಾ ಹೊರ ಎಳೆಯಲು ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜದ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಗೂಢ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಚ್ಚಿ ನಡೆವೆ ನೀತಿ ನೇಮಗಳ ಭಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವೆ ಆಕಾಶವೇ ಮೇಲ್ಬೀಳಲಿ ಭೂತಾಯೇ ಪಾಳ್ಬಿರಿಯಲಿ ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವೆ ಅಶ್ವಮೇಧ 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 ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ಕಲಕಿ ಹೊತ್ತಿದೆ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿ ರೋಷಾಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆ ಉರಿದುರಿದು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಝೇಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಡುವೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಯಜ್ಞ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ನಡೆಸುವೆ ಅಶ್ವಮೇಧ 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 Wow, wow, wow. Matlab, sir, Krishna sir, please take a bow from me, sir. Matlab, baap re. Sir, I had means in Sihor last time I had heard you singing live, and today means literally last time you had given a miraculous talk on all the great legends of Indian folk Indian music, and this time, sir, you have surpassed that also. My God. Means that Ashwamedha, the toppest pitch really means it hit you so hard that it reverberated और मेरे रोंगटे अभी तक खड़े. My God, sir, really take a bow. Sir, you're an inspiration. I absolutely am speechless at this point of time. See, traditionality and culture is what is really the essence of a person who is Indian. Howsoever Western we may become or westernized our thought may become, but Indianness is something that never goes out of our thought process. So I really, it's hats off to Krishna sir once again in your selection of song and the performance of song and execution. You have given all of us a lesson in Indianness. Jai Hind. Really, really, sir. Maja aa gaya. And now. And means there has to be no lesser person who can follow Krishna sir. I have a very, very special person in the form of Dr. Radha Munje ma'am, who despite her extremely busy schedule has spared time for us and has prepared a special performance for us. I would like to welcome Radha Munje ma'am for giving her performance. Welcome ma'am. Good evening, friends. Just 2 days ago, I was invited to a function on Republic Day in a school. And as you know, on these days, particular days, children perform various acts. And when I went to this school, the children performed on the theme of contribution of ancient Indian literature and science to the world. And it was wonderful to watch all these children enacting Aryabhatta, Sushruta, Charaka, Punarvasu, Atri, and so on. And they told how we have contributed to the world by giving a zero and the medicine, the Ayurveda which was given, and even the plastic surgery and all. Don't worry, friends. I'm not going to tell you a long story of what happened in school. I've come here with another story, but it's a short one. Few of us have been to Rajasthan just 2 months ago for a conference. And many of you must have visited Rajasthan and places like Udaipur, Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Chittorgarh, Ajmer, and so on.
You must have listened to various stories of valor of various kings which have ruled Rajasthan or which were the kings of Rajasthan. I'm going to tell you such a short story now. So let's listen to that story and I'll try to create the atmosphere also. All of you must have heard about Prithviraj Chauhan. And many of you must have only heard about Prithviraj and Sanyogita because that story is as famous and as liked as we talk about the Romeo, Juliet, and so on and so forth. But I'm not going to tell you that also. Prithviraj was born to his parents a little late, like they were waiting for a child for a long time. But when he was born, people were jealous because when a son is born to a king, naturally will be getting the throne and other people's chances would be diminished. So उन्होंने हर तरीके से उसको परेशान करना चाहा, मगर पृथ्वीराज बचपन से ही बहुत साहसी और निडर थे। कहा जाता है कि उन्होंने युवा जीवन में ही निहत्थे हाथों ने दोनों हाथों से बिना कोई शस्त्र लिए एक शेर का जबड़ा चीर कर उसकी जान ले ली थी। तो और वो सिर्फ साहसी ही नहीं थे, उनका जो राज था वो सिर्फ राजस्थान में नहीं था, राजस्थान से दिल्ली तक उनका पूरा राज्य फैला हुआ था। So he ruled till Delhi, about which many of us do not know. We always think that Prithviraj Chauhan was a king of Rajasthan or Mewar. That is not so. जब पृथ्वीराज चौहान का राज था तो आक्रमण, भारत पे आक्रमण होने लगे थे फ्रॉम द वेस्ट साइड। तो तुर्कस्तान ने आक्रमण किया, वो जीत नहीं पाए। उसके बाद मोहम्मद घौरी ने तो पृथ्वीराज चौहान पे 17 बार चढ़ाई की, उसको जीतने की कोशिश की। पृथ्वीराज ने 16 बार मोहम्मद घौरी को हराया और भारत के बाहर खदेड़ा। लेकिन एज इज द प्रिंसिपल ऑफ राजपूत, वो निहत्थे पे कभी वार नहीं करते, इसलिए हर बार पृथ्वीराज ने घौरी को जीते जी यहां से वापस जाने दिया। और यही गलती हमारे कई राजाओं ने की है और बाद में इस गलती की उन्होंने सजा भी भुगती है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स पाले हैं, निभाए हैं, लेकिन जिसको हमने जान बख्शी उन्होंने कोई प्रिंसिपल से हमसे पेश नहीं आए। आगे चलते हैं। 17वें बार जब मोहम्मद घौरी ने पृथ्वीराज पे चाल की, अटैक किया, तो पृथ्वीराज के खुद के ससुर ने घौरी से हाथ मिलाने के कारण वो पृथ्वीराज को जीत पाए और उन्होंने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने दरबार में लेके गए, अपने राज्य में लेके गए। वहां उन्होंने पृथ्वीराज की बहुत प्रताड़ना की, उनको बहुत तंग किया, शारीरिक कष्ट दिए। कहा जाता है कि उनके आंखें भी निकाल दी गई। इतना सब सहते थे वो, लेकिन उनके साथ में उनके एक सेवक और दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था चंद बरदाई। चंद बरदाई राजा की सेवा तो करते ही थे, मगर साथ साथ हमेशा ये सोचते थे कि मेरे राजा को मैं यहाँ से कैसे अपने देश वापस ले जाऊं, कैसे मैं मेरी राजा की जान बचाऊं। और ऐसा मौका उन्हें तब मिल गया जब मोहम्मद घौरी ने ऐलान किया कि उनके दरबार में प्रतियोगिता होगी तीर चलाने की, भाला चलाने की, और उसमें जो जीतेगा तो नेचुरली उसे तो जो किताब मिलना है, बख्शिश मिलना है, वो मिलेगा। तो चंद बरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज को भी इस प्रतियोगिता में मौका मिलना चाहिए। घौरी ने उसका बहुत विरोध किया, उसने कहा कि वो देख नहीं पाता और वो उसको तो मैं राजा भी नहीं मानता हूं, तो उसे मैं मेरे दरबार में आके ये सब तो नहीं करने दूंगा। मगर चंद बरदाई ने बहुत मशक्कत की और बहुत मशक्कत के बाद घौरी मान गया कि पृथ्वीराज को भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए, या कम से कम उसे भाग लेने की उन्होंने परमिशन दे दी। प्रतियोगिता का दिन आया, पृथ्वीराज चौहान दरबार में पहुंचे, उनके साथ साथ चंद बरदाई भी थे। चंद बरदाई ने देखा कि यही एक मौका है जब पृथ्वीराज के हाथ में तीर कमान है, पृथ्वीराज के साथ में उनका भाला भी है। पृथ्वीराज को एक बहुत ही विशिष्ट कला में वो निपुण थे, वो लक्ष्यवेद जानते थे, शब्दवेद भी जानते थे। तो जहां से आवाज आती थी उसका निशाना वो चूक साध लेते थे। उनका तीर बराबर निशाने पे बैठता था, कभी चूकता नहीं था। इतिहास में कहा जाता है कि ये शब्दवेद की कला बहुत कम लोगों में थी। पहले तो थे राजा दशरथ, जिन्होंने पानी पीने की आवाज सुन के हरिण
होगा यह सोच के जो तीर चलाया था वो श्रवण को लगा था। तो उसी तरह पृथ्वीराज भी शब्दवेद में बहुत माहिर थे। चंद बरदाई ने देखा और सोचा कि यही मौका है जब मेरे राजा को मैं छुड़ा सकता हूं और मेरे राजा उनके बलबूते पे यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सकते हैं। चंद बरदाई ने राजा को बहुत ही अच्छे तरीके से मगर बहुत गुप्त तरीके से सबके सामने बताया कि घोरी कहाँ बैठा है। उसने कहा 4 बाज 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, 4 बाज 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी उन्होंने डिस्टेंस बताया कि कहाँ घोरी बैठा है। उन्होंने मत चूको चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान को ये बताया कि बस यही मौका है, ये मौका आपके हाथ से छूटने न पाए और आपको निशाना सही जगह लगाना है जो मैंने बताया। और जैसे ही घोरी ने ताली बजा के प्रतियोगिता आरंभ करने को कहा, वही आवाज सुनते ही पृथ्वीराज ने जो तीर चलाया वो जाके घोरी के सीने में जो अचूक बैठा, घोरी वहीं से अपने सिंहासन से नीचे गिर गया। आनन फानन भाग दौड़ लोगों का हल्ला जो हुआ, उसी आनन फानन में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को वहां से अपने साथ निकल लेने में कामयाब हो गए और अपने देश पृथ्वीराज को सही सलामत जीते जी वापस ले आए। तो ये जो कहानी है इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद बरदाई ने जो वर्णन किया तो वो जो वर्णन है वो उनका शब्द सामर्थ्य है जिससे उन्होंने राजा को बताया। राजा खुद शब्दवेद में माहिर तो थे ही, मगर उसके साथ मुझे लगता है कि उन्हें एक एंशियंट ज्योमेट्री भी शायद पता होगी, क्योंकि राजा तो नीचे खड़े थे और घोरी तो ऊपर सिंहासन में था। तो वहां से ना सिर्फ डिस्टेंस बल्कि एंगल को मेजर करना और स्पीड से अपना तीर कमान छोड़ना ताकि राजा को घोरी को पता चलने के पहले ही तीर निशाने पे बैठ जाए, ये कला आने के लिए मुझे लगता है कि साथ साथ उन्होंने ये साइंस भी सीखा होगा, उसमें वो माहिर होंगे। और इसीलिए मैंने आज ये कहानी बताई है, बिकॉज दिस इज एंशिएंट विजडम which helped Prithviraj to save his life as well as kill Gauri उनके हुनर से। And that is all I want to say. And thank you CCI for listening to this. And I'm sure you have all enjoyed this story and many of you did not know about it. Thank you. वाओ वाओ मैम, हैट्स ऑफ। मतलब मैं क्या बोलूं मैम, हमारे भारत की संस्कृति को हम मतलब वाकई में मुझे खुद के इस स्टोरी के बारे में नहीं पता था मैम। एंड द वे यू इनेक्टेड इट मींस आपका कैप, आपका प्रॉप अप मैम, वी नो हु यू आर अ स्टॉलवर्ट मैम, but still you took time out for CCI and enlightened us with this great heritage of ours, which all of us should know. This is really a blessing, ma'am. Radha ma'am, please take a bow from me. And means हम सब कृष्णा सर के छोटे छोटे ग्वाले हैं और हम सब आपसे सीख रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको नेक्स्ट मंथ भी हमारे CCI कल्चरल के लिए एक स्किट करनी है। प्लीज मैम, हमको इंडियन हेरिटेज की इस विरासत जो आपके पास में है उससे प्लीज आप अभिभूत कराइए। मेरी एक भारतीय होने के नाते, एक छोटे आपके भाई होने के नाते आपसे कि प्रार्थना है, प्लीज हमको आपके इस एक्सपीरियंस से आप वंचित कभी मत रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मजा आ गया। मतलब मैं क्या बोलूं, अभी हमारे इंदौर में एक भारतीय प्रवासी मीट हुआ था जिसमें इंदौर में माता अहिल्या के गाथा, राजवाड़ा और इंदौर एवं भारत की महानता के बारे में कई सारी चीजें हमको पता चली। तो हमें हमारी इस संस्कृति को संजोना है मैम, और इस संस्कृति को संजोने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। और आज मैं मतलब I am so happy that we have participation of 2 very very special children. One from our beloved Dr. Atri, who is the flavor, essence and heart of CCI, and one from Dr. Vibhu Kawatra, whose nephew
डॉक्टर वियान इज लॉग्ड इन सिंस 8 o'clock। भाई वो छोटा सा बच्चा है जो 8 बजे से बैठा है। तो अत्री भाई, आपके छोटे छोटे बच्चों के डांस से पहले मैं वियान को मौका दूंगा कि वियान आए और उसकी परफॉर्मेंस दे। प्लीज वियान वासुदेव कवात्रा की परफॉर्मेंस पेश कीजिए। About West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, lies older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the day I belong, West Virginia. Mama, take me home, country roads, all my memories. Yeah, the brown hair, by the lady, straight to blue water, dark and dusty, painted on the sky. This is the blue shine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the land I belong, West Virginia. Mama, take me home, country roads. I hear her voice in the morning hour. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down वियान, वियान कम लाइव। वियान एक बार लाइव आ जाओ बेटा। वाओ वियान, अमेजिंग। विभू, वियान, वियान इज लाइव। वियान ग्रेट मैन। मतलब मैं पूरे सीसीआई के हमारे 3,500 चेस्ट फिजिशियंस की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपका अभिवादन करता हूँ। बहुत बढ़िया वियान बेटा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमें बहुत गर्व है। विभू हमारा एक बहुत स्पेशल सदस्य है। जब भी दिल्ली की बात होती है तो विभू हमको एयरपोर्ट पे तैयार मिलता है कि यार चलो भाई, एरो सिटी के कौन सी खाक नहीं छानी होगी विभू के साथ में। आज वियान आप भी आ गए तो विभू की याद आपने और पुख्ता कर दी। वियान कुछ बोलोगे बेटा? अरे वाह वियान। वियान कौन सी क्लास में हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, बताओ तो सही। वसंत वैली स्कूल 2B। क्या बात है बेटा, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया वियान। वियान सिंगिंग तुम्हारी हॉबी है, सिंगिंग करते हो रेगुलर? हाँ मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया वियान, तुम और आगे बनो। इंडियन आइडल और ये सब चीजें छोटी हैं, आप तो अपना रियाज चालू रखो। भगवान करेगा तो आपको बहुत अच्छा सफलता देगा। थैंक यू वियान, खुश रहो बेटा, आयुष्मान भव। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ हमारे वियान भाई का परफॉर्मेंस आप सबने देखा। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा एक अत्री भाई जो रांची में रहते हैं, जहां बहुत रिसेंटली हमारा एक 2020 भी होने वाला है, शायद आज ही है या कल है। MS धोनी की उस पावन धरती से हमारे अत्री भाई आते हैं, जो खुद MS धोनी से कम कद नहीं रखते हैं। और आप आने वाले परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कि अत्री भाई का जेनेटिक मेकअप कितना स्ट्रांग है कि उनके बच्चे भी वही क्षमता और वही स्किल रखते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अत्री भाई के बच्चों की शानदार जानदार परफॉर्मेंस के लिए। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
क्या बोलूं यार अत्री भाई, यू आर ब्लेस्ड एंड यू कीप अस ब्लेस्ड। मतलब आप अत्री से 2 मिनट भी बात कर लो अत्री भाई से, तो ऐसा लगता है कि यार यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अत्री हैज दैट वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी इन हिम, ही मेक्स यू फील फुल ऑफ दैट यू कैन डू इट फॉर सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड। मतलब अत्री भाई आप में और आपके बच्चों में, और आप, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, द फैमिली इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, बट अत्री भाई वी आर ऑल विथ यू एंड लुकिंग एट योर चिल्ड्रन, आई नो यू विल ऑलवेज बी चार्ज्ड। So now coming to our last 2 performances. These performances are so special कि इनका वीडियो हमने बचा के रखा है। अभी हमारे पास सिर्फ इनका ऑडियो है, क्योंकि बिजी पीपल प्रैक्टिशनर हैं, समझ सकते हैं, बट हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारी प्रिय ज्योति दास मैडम के हस्बैंड डॉक्टर नितिन का है, उसको हम अब सुनेंगे। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू listen to it with closed eyes. He has a very mesmerizing voice. Please play Nitin's ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सबसे जमाने है बाहर के हम भी आए रात प्यार के। जब से जमाने है बाहर के हम भी आए रात प्यार के। कोई न कोई तो बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राह में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे मना उसको नहीं मैं पहचानता, उसका पता भी नहीं जानता। उसको नहीं मैं पहचानता, उसका पता भी नहीं जानता। मैंने लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम तेरी राह में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी दिल में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी दिल में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरज कभी तो दिखाएगा, खड़े हैं हम भी राह में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा,
जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। नितिन सर आप कोल्हापुर के पास कहीं हैं, कनेक्टिविटी भी बड़ी पुअर है, बट आपकी आवाज में वो जादू है कि या इंदौर में बैठे हुआ इंसान भी नाचने लगता है। मतलब अमेजिंग अमेजिंग, मतलब बहुत बढ़िया। तो नाउ सी नितिन सर इज समथिंग एल्स। मैंने जब भी नितिन सर को देखा है तो ही इज लाइक एन फील्ड ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम, and I am really thankful to you, sir, despite of your positive, despite of your busy schedule and low connectivity, you could contribute to our today's program, and I'm really thankful to that. Looking for another performance from you in the CCI third cultural event. Now coming to the last performance of the day, ज्योति जेवी दास जो हमारी सबसे प्रिय बहन है, छत्तीसगढ़ से आती हैं। रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छा क्लिनिक किया है, बहुत अच्छे कैंप्स कर रही हैं। रियली ज्योति इज एन एग्जाम्पल। इंदौर में मैंने सीसीआई का एक एमपी चैप्टर का कॉन्फ्रेंस किया था। ज्योति केम ऑल द वे डाउन, शी स्पेयर टाइम फॉर दैट, शी इज सो नाइस, शी इज वेरी गुड। एंड आज उनके हस्बैंड का एक परफॉर्मेंस हम सब सुनेंगे। नाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट हिज परफॉर्मेंस, प्लीज। तन्हाई दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, टूटे ख्वाब सारे एक मायूसी है छाई, हर खुशी सो गई, जिंदगी खो गई, तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई। तन्हाई तन्हाई पलकों पे कितने आंसू है लाई, तन्हाई तन्हाई पलकों पे कितने आंसू है लाई। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज बस इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या हाँ इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम।
मतलब नमित भाई, मेरे को तो लगता है कि ज्योति जब भी नाराज होती होगी तो आप तो गा के मना लेते होगे। मजा आ गया। मतलब क्या तो तन्हाई और क्या तो मतलब आपका जो मिक्सचर था, जो आपकी पैरोडी थी, इट वाज एक्सीलेंट। एंड मान गए आपकी आवाज को। मैं आपको न्योता एक एडवांस में देता हूँ CCI 3 का, कि प्लीज आप एक सिंगल गाना गाइएगा, किशोर कुमार जी का गाइएगा, पर प्लीज गाइएगा जरूर। ये इंदौर का आपका बड़ा भाई डॉक्टर रवि डोसी गुजारिश कर रहा है आपसे, और हो सके तो ज्योति के साथ डुएट में गाना। मुझे पता है ज्योति इतने अच्छे प्रेजेंटेशन देती है कि आप दोनों मिलकर बहुत बढ़िया गाओगे। नाउ I am very happy that we have concluded the CCI's second cultural webinar, and you all of you might, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा। हरि किशन सर हैं, उन्होंने ब्रोंकस के लिए इनवाइट किया था, बट देयर वर सम रीजंस आई कुडंट गो। बट आई फील कि रीजन ये था कि मुझे आज CCI के कल्चरल मीट को मॉडरेट करना था, इन सभी गानों को, इन सभी परफॉर्मेंसेस को लाइव महसूस करना था। मैं डॉक्टर रवि डोसी इंदौर का एक चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं CCI का एक अदना सा मेंबर हूँ, पर मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि ये कल्चरल इवेंट जो है हम सभी का है, आपका है, आपके परिवार का है। आप पुरजोर रूप से इसमें भाग लीजिए। आप अपने सभी परिवार वालों को, काकी, चाची, मामी और दूर की भी कोई मौसी हो तो उनको बोलिएगा। पर हम उन सभी के कल्चरल बेनिफिट्स को लेना चाहेंगे। हम सभी हमारे लाइफ मेंबर्स के बेनिफिट्स लेना चाहेंगे। मैं कृष्णा सर का एक छोटा सा प्यादा हूँ, पर मैं बस यही बोलूंगा कि कृष्णा सर भी यही चाहेंगे कि प्रत्येक लाइफ मेंबर एक बार आके यहाँ पे गाना जरूर गाए, एक CCI के कल्चरल इवेंट का जरूर पार्ट बने। तो अगले फरवरी की आखिरी शनिवार का जो कल्चरल प्रोग्राम है, उसके लिए मैं आप सभी को न्योता देता हूँ। आप सभी को मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध है। प्लीज आप अपनी एंट्रीज फॉरवर्ड करिए। आप अगर लाइव परफॉर्म करना चाहते हैं तो आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। प्लीज कम फॉरवर्ड, please come forward and please participate in your own event, which is CCI cultural event. Okay, good night, happy Saturday, happy weekend, and wish you a great February. Thank you.